Good morning, student. Welcome to GYANJYOTI online classes. Student, today we will discuss about the different type of chemical process that changes around us. Okay, so now we are going to discuss chapter number 6, exercise. Okay, student, I already told you about the different type of process changes, natural changes, okay, and periodic changes, desirable changes, undesirable changes, reversible changes, irreversible changes. Okay, so student, we have already learned about the physical changes, chemical changes, and expansion or contractions. Okay, so those all that about the our chapter, the different types of changes around us. Okay, so student, let's start some question answer. First, take the correct answer. Take the correct answer. Okay, student, heat can change. Okay, so first question number 1, heat can change: A, state of an object; B, size of an object; C, solubility of a substance; D, all of the above. Okay, so heat can change state of an object. Okay, so student, if we change the state of the object, okay, like heat, that ice can convert into water. Okay, that changes their state. So number 1, A option also, option A. Okay, so size of an object. Okay, so heat also change the size of an object. Okay, and solubility of a substance. Solubility means the ability of dissolve. ओके, जो एबिलिटी रहता है उसको डिजॉल्व होने के लिए. ठीक है, सो स्टूडेंट, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, हीट कैन चेंज, हीट क्या क्या कर सकता है? स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकता है, साइज में भी उसका चेंज होगा, एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस भी. ठीक है, सो नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, all of the above. Okay, if there is a change in composition of a substance, we call it A. okay, जब किसी भी चेंजेस होगा, जो भी चेंज होगा, फिजिकल होगा, केमिकल होगा, तो इसमें क्या होगा, इसको हम कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो फिजिकल चेंज, फास्ट चेंज, पीरियोडिक चेंज एंड केमिकल चेंज. ओके, सो स्टूडेंट, इसमें से फिजिकल चेंज तो नहीं होगा. किसी का फिजिकल चेंज होता है तो उसमें सब्सटेंस जो होते हैं वो अलग से चेंज होते हैं, उसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता. जबकि फास्ट चेंज जो बहुत फास्ट होगा, पीरियोडिक, सीजनल चेंज है. और केमिकल चेंज, हाँ, केमिकल चेंज में क्या होता है, वो नया सब्सटेंस बनाता है. ठीक है, तो वो नया सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो फिजिकल केमिकल चेंज किसको कहेंगे? द सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग ए नया सब्सटेंस चेंज होगा. ठीक है, केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो द नंबर बी, द ऑप्शन बी, केमिकल चेंज. केमिकल चेंज जो है ये करेक्ट आंसर है. ओके, एक्सपेंशन गैप्स आर केप्ट इन रेलवे ट्रैक्स बिकॉज ऑफ. ठीक है, तो जो रेलवे ट्रैक में जो एक्सपेंशन गैप होता है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है. ठीक है, तो इसमें जो गैप रहता है बिटवीन द टू ट्रैक, बिटवीन द टू लाइन, ठीक है,
सिंगल लाइन में उसमें कुछ गैप दिए होते हैं, गैप है। ओके, सो स्टूडेंट एक्सपेंशन गैप्स आर केप्ट इन रेलवे ट्रैक्स बिकॉज ऑफ नंबर 1 एक्सपेंशन ऑफ rails in hot weather, option B contraction of rails in hot weather, and option C expansion of rails in cold weather, and number D contraction of rails in cold weather. Okay, so the correct answer is student expansion of rails in hot weather. Expansion of rails in hot weather. Okay, number 4 death is not an example of chemical change. Okay, so cooking of food जो है वो चेंज होता है, उसका जो कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। ओके स्टूडेंट, राइपनिंग ऑफ फूड वो नया सब्सटेंस में चेंज होता है, केमिकल चेंजेस जो नहीं है इसमें बताना है। ठीक है, सो कुकिंग ऑफ फूड ऑप्शन बी राइपनिंग ऑफ ए मैंगो, मेल्टिंग ऑफ वॉक्स एंड बर्निंग ऑफ पेपर। ओके, सो स्टूडेंट देखो कुकिंग ऑफ फूड हो रहा है, मतलब ये कुकिंग करेंगे तो इसका चेंज होगा। ठीक है, तो ये फिजिकल में आ जाएगा। राइपनिंग ऑफ फूड ये भी चेंज होगा। मेल्टिंग ऑफ वॉक्स वो मेल्ट होगा। ठीक है, तो ये केमिकल में नहीं आएगा, ये मेल्ट होगा। तो ये व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, तो मेल्टिंग ऑफ वॉक्स। ओके, नंबर 8 forging or casting metals is an example of. Okay, so physical change, chemical change, last change, natural change. Okay, so student physical change होगा, क्योंकि forging and casting metals is an example. ठीक है, इसका physical change। Okay student, fill in the blank. Now we come number B. Okay, fill in the blank. During a deck change, the identity of the substance does not change. ठीक है, जो substance होते हैं उसका पूरा चेंज नहीं होता, उसका आइडेंटिटी। ठीक है, तो पहला फर्स्ट नंबर इज फिजिकल चेंज। Then you have to write. Okay, during a deck change, the identity of the substance does not change. Okay, फिजिकल चेंज, तो वो सब्सटेंस का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता। ओके, नंबर बी, नंबर 2 न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग ए डेक्स चेंज। ठीक है, जो जिस प्रोसेस में नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, तो केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट, so new substances are formed during a chemical change. Okay student, number 3 most substances decks on heating. ठीक है, तो बहुत से सब्सटेंस है जितने भी, और एंड डेक्स ऑन कूलिंग, क्या करने से वो हीटिंग होगा और क्या करने से वो कूलिंग होगा। ओके, स्टूडेंट, सो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट एक्सपेंड। ओके, तो उसके जो शेप होते हैं वो एक्सपेंड होगा, और उसके जो हीटिंग एंड डेप्थ ऑन कूलिंग, कूलिंग करने से वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ओके स्टूडेंट,
Okay, so most of the substances expand, okay, on heating and that's on cooling. Expand होगा और contract on cooling. Okay, number 4, most metal object are made by the process of, इससे बहुत सारा मेटल जो है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ, बहुत सारे मेटल्स बनते हैं किस प्रोसेस से बनते हैं, सो कास्टिंग, कास्टिंग जो करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारा मेटल्स आते हैं. ओके स्टूडेंट, नंबर 5, a change usually occurs due to the effect of some kinds of डेक्स. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चेंज होता है. ठीक है, तो चेंज यूजुअली अकर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सम काइंड ऑफ, तो किस लिए ये चेंज होते हैं, ठीक है, एक प्रकार की एक एनर्जी है, एनर्जी से ही ये चेंज होगा. सो ये चेंज यूजुअली अकर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सम काइंड्स ऑफ एनर्जी. Okay, student. Okay, now we come the state true or false. Okay, state true and false. Okay, number 1, principle of thermometer is that on heating mercury lowers down in the tube. Okay, so थर्मामीटर जो है उसमें मर्क्यूरी जो हीटिंग देता है. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर इज दैट ऑन हीटिंग मर्क्यूरी लोअर डाउन इन द ट्यूब. ठीक है, मर्क्यूरी जो होते हैं लोअर में होते हैं, लेकिन ये बोले हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज फॉल्स. Number 2, gases contract on cooling. Yes, गैस जो होते हैं ये कूल हो जाते हैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से. ओके, नंबर 3, every change has some cause. Yes, कुछ भी चेंज होगा तो उसमें से कॉज होगा. Yes, नंबर 4, melting of ice cube is a physical change. यस, मेल्टिंग होगा तो फिजिकल चेंज होगा, आइस से वाटर होगा तो फिजिकल चेंज. ऑल मेटल्स एक्सपेंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. यस, ओके, नंबर 3 ऑल्सो ट्रू. ओके स्टूडेंट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. ठीक है, तो मैच करना है. ओके, नंबर डी. Now we come number D. Match the color. Okay, number column 1 or okay, student column 2. In here, number 1, chemical changes. Okay, chemical change. Number 2, natural and undesirable changes. Natural and undesirable changes. Number 3, physical change.
Number 4, periodic change. Number 3, expansion of solid. Number 6, expansion of gases. Okay, student, in here column A, dissolving salt in water. Dissolving salt in water. Okay. B, fitting iron ring on a wooden wing. Fitting iron ring on a wooden wing. Number C, burning of candle. Option D, sorry, number D in here, heavy rain causes flood. Heavy rain causes flood. Okay, number E, inflated balloon kept in sand. Okay, number F, revolution of moon. Revolution of moon around the earth. Okay, student, so you have to match the following column A and column 2. Okay, column 1 and column 2. Okay, so first chemical change, that burning of candle. Okay, number 2, natural and undesirable change. Okay, heavy rain and cause flood. Okay, so natural, the heavy rain and cause flood. Okay, this is the natural and undesirable changes. Okay, change. Okay, next number, physical change, dissolving salt in water. Okay, and periodic change, revolution of moon around the earth. Okay, student, expansion of solid, fitting iron ring on a wooden wheel. Okay, and student, expansion of gases, inflated balloon kept in salt. Okay, so all these about your match the column. Okay, now we come another match the column A, 1, 2 and 3. So student, you have to do 3 columns A, B and C. Columns A, column 2 and column 3. You have to match 3 columns. Okay, first column A. Okay,
and column 2, column 3. Okay, student, in here a matchstick catching fire. First, catching fire. Number 2, roasting iron. Roasting of iron. Number 3, burning of paper. Flowering of plant. Okay. Number 8, in your column 2, chemical change. Number B, fast change. Number C, irreversible change. Okay. Number D, acid and carbon dioxide gas release. So student, in here acids and carbon dioxide gas release. Okay, student, column 3, 1 cannot be reversed. Okay. Option, another number 2, can be avoided by painting. Number 3, take few seconds to occur. Okay. And last number 4, chemical change. Okay, student, first matchstick catching fire. Okay, matchstick catching fire, that first change. Okay, you have to match first change, and first change in here you have to match column 3. Okay, so student, first change, that change chemical change. Okay, first change, that is chemical change. Okay, so matchstick catching fire, that first change and chemical change. Okay. Next, rusting of irons. Student, you have seen many irons that outer cover that rust up the that oxygen, that reaction of oxygen is also one type of chemical reaction. So rusting of irons. Okay. So chemical change, rusting of iron, chemical change. Okay, and can be avoided by paint. Okay, so student, rusting iron we can avoid by avoided by painting. ठीक है, उसमें पेंट कर देंगे. ठीक है, जो आयरन है उसमें पेंट करके रखेंगे. ये जो आयरन है तो इसमें ये रस्ट नहीं होगा. ठीक है, जंग जो लगते हैं आयरन में. ठीक है. ओके, नंबर 3, बर्निंग ऑफ पेपर. ओके, तो पेपर जब बर्न होगा तो उसमें
एसएस जो है वो बाहर आएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होंगे। ओके, एंड टेक फ्यू सेकेंड टू ऑफर। ओके, ये समय टाइम जो है ये काम। ओके, टेक फ्यू सेकेंड टू ऑफर, कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई देंगे। ओके, ओके स्टूडेंट, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, ओके, इरिवर्सिबल चेंज, ओके, एंड irreversible change and cannot be reversed, ये reverse नहीं होगा। okay student, so all these about your column A, you have to match column A with the column B means column 2, okay, and you have to match column 3। okay student, ये सब को आपको मैच करना है, ठीक है। तो ये सब इसके चेंजेस, केमिकल चेंजेस नंबर कॉलम ए को और 1 को कॉलम 2 के साथ एंड कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ जोड़ना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम नंबर एफ। गिवन below are a number of changes, identify each of them as physical और chemical change। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चेंजेस हुआ है, ठीक है, इसमें से कौन सा फिजिकल है और कौन सा केमिकल है। ओके, सो व्हेन ऑल इज बर्न इट टर्न इनटू आस। ओके, सो स्टूडेंट नंबर एफ, जब कोल बर्न होगा, ठीक है, कोल जलेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इट टर्न्स इनटू आस। तो ये नया एक चेंजेस हुआ इसमें। तो केमिकल चेंजेस का जो डेफिनेशन है, ये नया सब्सटेंस जो चेंज होगा, नया चेंज होना है, ठीक है, तो ये नया फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, केमिकल चेंज को क्या कह सकते हैं, केमिकल चेंज। फर्स्ट नंबर जो होगा ये केमिकल चेंज है। ओके स्टूडेंट, नंबर 2, व्हेन द चिकन और हीटेड इट्स गेट रोस्टेड, ठीक है। तो हम जब भी चिकन को क्या करेंगे, चिकन को क्या करेंगे, हीट करेंगे। ओके, इट्स गेट रोस्टेड, ठीक है। तो ये भी एक नया फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज। ओके, नंबर 3, व्हेन आइस इज मेल्टेड, ठीक है, आइस जो है मेल्ट होगा, इट टर्न इनटू वाटर, ठीक है। तो ये आइस से वाटर होगा, बस इसका स्टेट ही चेंज होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाटर का वाटर रहेगा बट इसका स्टेट जो है चेंज होगा। तो ये फिजिकल चेंजेस, इसका फिजिकल चेंज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर 4, व्हेन आयरन इज लेफ्ट इन मॉइस्ट एटमॉस्फेयर इट्स गेट रोस्टेड, ठीक है। तो आयरन जो है इसमें रिएक्शन होता है, किसका रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होने से इसमें जो जंग लगते हैं, ठीक है, रोस्टिंग, इसी को कहा जाता है। सिर्फ आयरन केस में ही इसको रोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो व्हेन आयरन इज लेफ्ट इन मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो आयरन क्या करेगा, छोड़ देगा इसे, इट गेट्स रोस्टेड। यस, केमिकल रिएक्शन है, इसका भी रिएक्शन जो होगा केमिकल रिएक्शन ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसमें रिएक्ट करता है, ठीक है। केमिकल चेंज। ओके, एंड लास्ट वन, व्हेन वुड कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, एंड इट्स गेट रोटेड, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब ये वुड जो है, ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में आएगा और बहुत टाइम तक रहेगा, ठीक है। सो इट्स गेट्स रोटेड। ओके, केमिकल चेंज, ये भी क्या होगा, केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट, सो ऑल दिस अबाउट योर different type of changes, that is chemical changes, physical changes, or only you have to write the which one the physical changes or which one the chemical changes. Okay, so you have to do all these number. Okay student, next we will do very short answer type questions.
Okay, and short answer type questions and long answer type questions you have to try yourself. Okay, so students, all this about your chapter number 6, changes around us. Okay, exercise, and next video we will do the short answer type questions and very short answer type questions. Okay, so students, thank you, have a nice day. Okay.